Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. So till yesterday I had my unit 3 exams going on, and during this week I even tried to manage JEE के classes. Live classes होते ही है, but most of them got cancelled, so मेरा जिंगा लाला हुहू कर रही थी. But actually having this tests 24/7 is like hectic task, because every day we give daily tests in our college. Then end of the week we'll have grand test, and later at the end of the month we'll have these unit exams. 24/7 exams, like it will be a pressure on us. But if we do smart work rather than hard work, everything seems to be easy, right? Giving tests is a good source of revision. We'll do revision, and also it's a re-revision also, and finally it will give us perfection, and final exam तो हम 4 देंगे. That shows कि हमने इतना साल भर मेहनत जो किया था, the total result will be shown in our final exams. Smart work doesn't mean that you have to go to exam hall and do cheating. I mean, people like me might think like that, but नहीं guys, smart work अगर आप cheating कर दिए ना, आप बाद में पछताओगे. I had a bitter experience. I just raised my head and that invigilator came and wrote she's talking in exam hall, and that was a bitter experience. From that day, after my exam is done, I started laying down on the bench. जब से मुझे वो एक्सपीरियंस हुआ था आज तक आई डिडेंट रेज माई हेड इन एग्जाम, आई डिडेंट रेस्पॉन्ड इफ एनी वन कॉल्स मी ऑल्सो. सो ऐसा होता है. स्मार्ट वर्क डजंट मीन इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर हार्स इन आर स्टडी टाइम. ऐसा नहीं है कि आई एम सिटिंग एट 2 o'clock आई शुड अगेन गेट अप फ्रॉम माई स्टडी एरिया फ्रॉम 6 o'clock. ऐसा नहीं. इट डजंट मीन कि हाउ मेनी हार्स यू स्टडी दैट मच इट इज़ बेटर फॉर यू. स्मार्ट वर्क का मतलब होता है वी नीड टू यूज साइंटिफिक मेथड्स. आई मीन यू कैन यूज निमोनिक्स फॉर ईजिली रिमेंबरिंग थिंग्स, एंड ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द टॉपिक, ताकि वी कैन अंडरस्टैंड द अदर टॉपिक्स मच ईजिली, बिकॉज वन टॉपिक इज रिलेटेड टू अनदर वन, स्पेशली इन सब्जेक्ट साइंस. सो ऐसा होता है कि जब हम स्मार्ट वर्क करते हैं वी कैन गिव मोर टाइम फॉर अदर टॉपिक्स रादर दैन जस्ट वेस्टिंग टाइम ऑन अ सिंगल टॉपिक. एंड मोस्ट ऑफ यू गाइज आर स्टिल आस्किंग क्या तुम ऑफलाइन कोचिंग ले रही हो. या गाइज, आई एम टेकिंग ऑफलाइन कोचिंग फ्रॉम माई कॉलेज, बट ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट. आई एम ओके विद इट, बट वाई आई प्रेफर फिजिक्स वाला मोर दैन दैट इज बिकॉज फिजिक्स वाला में जो कॉन्सेप्ट हमें इस कॉलेज में समझाया जाता है, आई अंडरस्टैंड इट मच क्लियरली, एंड ऑल्सो आई गेट टू नो मोर न्यू थिंग्स दैट हैव स्टडीड इन कॉलेज. एंड एज यू गाइस कैन सी, आई हैव माई इंग्लिश एग्जाम टुमारो, बट आई एम लिसनिंग टू द लाइव क्लास ऑफ फिजिक्स वाला. आई मीन 3 क्लासेस होते हैं, बट ड्यूरिंग एग्जाम्स आई ओनली लिसन टू 1 class, and also this class was cancelled half of the week because sir was not feeling well, and also it was a good thing because I didn't skip classes. But whenever it comes about this math exam, physics exam, chemistry exam, I will have to skip the class for some time. But ऐसा हुआ कि when I had this exam the class was cancelled, so yeah, I didn't miss those classes. Managing school and JEE is a big hectic task because I didn't know that this will be this hard, because जब मैं 11th class के vlogs देखती थी, जब मैं 10th class में थी, why is it so hard for them? Arey, that's so easy. But now when I'm experiencing it, I'm understanding ki yaar, this is really a big thing. And Swami Vivekananda's quotes are always so inspiring, so this is so inspiring for me. Whatever you think, that you will be. If you think yourself weak, weak you will be. If you think yourself strong, strong you will be. So that's a very good quote, and whenever I feel low, I just remind myself about this. This week is total holiday for me, so I want to utilize it well. मैं सोचती हूँ but कुछ नहीं करती हूँ. But now I don't think that I am that lazy side that I was in the Dasara vacation. Now as I already said, from October 26th I guess I instilled myself a good motivation in me. So I hope that this holidays turn out to be golden days for me. Everything is easy when we are busy, but nothing is easy when we are lazy. तो guys, मुझे busy होनी है तो मुझे पढ़ाई भी करनी है. So we have come to an end of today's vlog. Well, I didn't shoot much of the days of my exam week, but कोई बात नहीं. I hope you guys found this video good, and yeah, that's it for today. I'll meet you again with a new vlog very soon. Till then, goodbye, take care, and keep following me on YouTube. Bye bye.